हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी माइंड्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उप्स कंसेप्ट पे। और आज हम यहाँ 40 से 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड ओओपी? आंसर इज इक्की 46 वी कांट से। एक्चुअली याद रखने के लिए हम लोग एलन के को याद रखने के लिए ए फॉर इक्के बोलेंगे यहाँ पे, और 46 की जगह पर हम 60 बोले तो इक्के 60 अगर हम याद रखें तो याद रख सकते हैं कि एलन के ने 1960 में इसका खोज किया था, इसको डिस्कवर इसका आविष्कार किया था। और उसके बाद इन्होंने 1960 से लेकर के 1967 तक इसके इवॉल्वमेंट में इसका टाइम लगा। 67 के बाद ये 1970 में स्मॉल टॉक जो पहला ओपी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया वो स्मॉल टॉक 1970 में आया, 1970 में आया। तो जब भी कोई स्मॉल टॉक जब भी कोई हमसे पूछे कि आविष्कार किसने किया था तो एलन के ओओपी का आविष्कार एलन के ने किया था। लेकिन पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब आया था? 1970 के आसपास, 70s 1970, कोई 1972, किसी बुक्स में 1960, मैक्सिमम जगह पे 1970 दिया हुआ है, तो हम लोग 1970 लेकर ही चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ ओओपी इन जनरल डेफिनेशन? जनरल डेफिनेशन में कौन सा ओओपी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर नहीं है? कोड एफिशिएंसी होता है, कोड रीयूजेबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है मॉड्यूलरिटी, और फोर्थ है डुप्लीकेट रिडंडेंट डेटा। तो एफिशिएंसी, कोड एफिशिएंसी तो रहता ही है, कोड रीयूजेबिलिटी भी हम लोग कर ही सकते हैं, इनहेरिटेंस, मॉड्यूलरिटी होता है। इसमें हम लोग क्वेश्चंस को जो कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलप करना होता है तो पहले उनको छोटे छोटे मॉड्यूल में बना के और फिर उसको इंटीग्रेट किया जाता है, तो ये मॉड्यूलरिटी इसमें रहेगा ही। डुप्लीकेसी, रिडंडेंट डाटा, ये नहीं होता फीचर, तो ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, which was the first purely object oriented programming language developed? तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया स्मॉल टॉक पहला ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, और डेवलप किया गया था किनके द्वारा? एलन के द्वारा। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन था तो उसमें होगा सैमुला, SIMULA। लेकिन अगर कोई पूछे कि पहला प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ देखिए एक वर्ड है प्योरली ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये होगा स्मॉल टॉक। ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और स्मॉल टॉक जो है फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, स्मॉल टॉक। नेक्स्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट डिड फर्स्ट केम इनटू पिक्चर? अभी हमने बताया कि 1960 से 1967 तक वो इवॉल्व करते रहे, लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब रिलीज हुआ तो हम लोग इसको मानेंगे 1970s। 1970s विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच फीचर ऑफ object oriented programming language OOP indicates code reusability? First option abstraction, next polymorphism, third encapsulation, fourth inheritance। तो कोड को रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है जो रीयूजेबिलिटी को शो करता है? तो दैट इज इनहेरिटेंस। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन में हम जानते हैं डेटा को सिर्फ उतना ही डेटा शो किया जाता है जितना सामने जरूरत है। पॉलीमॉर्फिज्म, सेम फॉर्म, एक ही चीज को कई अलग अलग फॉर्म में शो करना, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। और इनकैप्सुलेशन मींस हाइडिंग द अनयूजुअल थिंग्स। यहाँ पे दो चीजें समझने वाली बात यह है, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग शो करते हैं उस डेटा को जो दिखाना जरूरी है,
और इनकैप्सुलेशन में हम लोग जो अननेसेसरी चीजें होती हैं उसको हाइड कर लेते हैं। तो दोनों का मकसद एक ही है, काम एक ही है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो चीजें हमें दिखानी है उसे शो कराते हैं, और इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं कि जिन चीजों को हमें नहीं दिखाना उसे हाइड कर लेते हैं। गुड। नेक्स्ट, which header file is required in C++ to use OOP? कौन सा हेडर फाइल जरूरत पड़ता है C++ में OOP को यूज करने के लिए? द आंसर इज OOP कैन बी यूज्ड विदाउट यूजिंग एनी हेडर फाइल। OOP यूज करने के लिए किसी भी अलग से हेडर फाइल की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, व्हाई जावा इज पार्शियली OOP लैंग्वेज? ये फुल्ली OOP लैंग्वेज नहीं है, पार्शियली है। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है इट अलाउज कोड टू बी रिटन आउटसाइड क्लासेस। ऑप्शन बी, it supports usual declaration of primitive data types. Option C, it does not support pointers. Option D, it does not support all type of inheritance. The answer will be it supports usual declaration of primitive data types. Primitive data types का ये usual declaration support करता है, इसलिए this will be the Java will be partially OOP language. Next, which among the following does not come under OOP concept? कौन सा ऐसा जो नीचे गिवन है, दिया हुआ है, इसमें से कौन सा OOP concept नहीं है? डेटा हाइडिंग है, that is encapsulation. मैसेज पासिंग है, डेटा बाइंडिंग है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। फाइन। प्लेटफॉर्म मैसेज पासिंग किस इनहेरिटेंस में बोलते हैं? इनहेरिटेंस में हम लोग कर सकते हैं, मैसेज पासिंग होता है। और डेटा बाइंडिंग एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन दैट इज डेटा बाइंडिंग, इनकैप्सुलेशन दैट इज डेटा हाइडिंग, और मैसेज पासिंग दैट इज इनहेरिटेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये OOP कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अलग होता है। नेक्स्ट है, which is the correct syntax of inheritance? पहले बेस क्लास को डिक्लेयर करेंगे। कौन सा सही? ऑप्शन ए है कि पहले बेस क्लास लिखेंगे फिर ड्राइव क्लास लिखेंगे। ऑप्शन बी है पहले ड्राइव क्लास लिखेंगे फिर बेस क्लास लिखेंगे। फिर ऑप्शन सी है पहले ड्राइव क्लास फिर बेस क्लास नेम, या फिर ऑप्शन डी है पहले बेस क्लास नेम फिर ड्राइव क्लास नेम। तो आंसर होगा बी, क्योंकि पहले ड्राइव क्लास लिखते हैं क्लास के साथ, क्लास के साथ क्लास कीवर्ड के साथ ड्राइव क्लास नेम लिखते हैं, फिर एक्सेस कीवर्ड के साथ बेस क्लास नेम लिखते हैं। दैट्स व्हाई आंसर विल बी बी। ठीक है, क्वेश्चन ये देखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट याद रखने पर आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द फीचर बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। कौन सा फीचर है जिसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के से इंटरेक्ट कर सकता है? दैट इज मैसेज रीडिंग, मैसेज पासिंग, डेटा ट्रांसफर, डेटा बाइंडिंग। द आंसर विल बी मैसेज पासिंग। Next, which among the following for a pure OOP language is true? Pure object oriented programming language किसे कहेंगे? The first option is the language should follow at least one feature of OOP. The second option, the language must follow only 3 features of OOP. The language must follow all the rules of OOP, and the language should follow 3 or more features of OOP. Which will be the correct answer? Yes, absolutely you are right. All the rules of OOP. If any kind of programming language that is following all the rules of OOP, that will be pure OOP language. Okay. Next, how many types of access specifier are provided in OOP? कितने access specifiers होते हैं OOP में? वेरी गुड। जैसा कि आपको पता है, पहला होता है प्राइवेट, दूसरा पब्लिक, एंड द थर्ड इज प्रोटेक्टेड। यस, एब्सोल्युटली।
three of access specifiers there are three access specifiers are there in OOP. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछला बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था. In multi-level inheritance, which is the most significant feature of object-oriented programming used? कोड एफिशिएंसी भी है, रीडेबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है. ये ओओपी में ये सारे फीचर्स हैं जो कि यूज हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है? दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन ओओपी? इनकैप्सुलेशन क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? ऑप्शन नंबर ए, it is a way of combining various data members and member functions that operate on those data members into a single unit. B, it is a way of combining various data members and member function into a single unit which can operate on any data. It is a way of combining various data members into a single unit. And the D option, it is a way of combining various members functions into a single unit. Next, which of the following is not true about polymorphism? Polymorphism के बारे में कौन सही नहीं है? Helps in redefining the same functionality. B option, increases overhead of function definition always. It is feature of OOP. Is of readability of program. The answer will be B. Increases overhead of function definition always. Next, what is an abstraction in object oriented programming? Abstraction, hiding the implementation and showing only the features. Yes, fine. Answer will be A. देखने में लग रहा है. नेक्स्ट है हाइडिंग द इंपॉर्टेंट डेटा. थर्ड ऑप्शन हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन. डी है शोइंग द इंपॉर्टेंट डेटा. इंपॉर्टेंट डेटा शो करना दैट इज फाइन, बट हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. दैट इज व्हाई आंसर इज हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट, व्हिच here hiding the implementation and showing only the features. Which among the following can show polymorphism? इसमें से ऑप्शन है A, overloading, ampersand, overloading operator, less than. Let's see. The answer will be B, overloading operator. The overloading operator that will, this operator will show the polymorphism. In which access should a constructor be defined so that object of the class can be created in any function? The answer is public. In which access should a constructor be defined? So access specifier, it is asking about the access specifier so that object of the class can be created in any function. किसी भी फंक्शन में अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर को कौन सा स्पेसिफायर में डिफाइन किया जाना चाहिए? दैट इज पब्लिक. यू ऑल नो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के वजह से अगर किसी डेटा मेंबर का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हो तो उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है. नेक्स्ट है द कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज्ड टू option A, copy an object so that it can be passed to another primitive data type variable. Copy an object for typecasting. Copy an object so that it can be passed to a function. Copy an object so that it can be passed to a class. Let's think. The answer will be C. Copy an object so that it can be passed to a function. Next, which among the following represents correct constructor? Class name with parenthesis symbol. The answer will be class name with parenthesis symbol. Next, what happens when an object is passed by reference? Destructor is called at end of function.
Destructor is called when called explicitly. Destructor is not called. Destructor is called when function is out of scope. The answer is C. Destructor is not called. What happens when an object is passed by reference? जब object को pass by reference किया जाता है, then destructor is not called. Which access specifier is usually used for data members of a class? कौन सा access specifier generally use किया जाता है data members के लिए, class के लिए? That is private. Next, how to access data members of a class? Dot, arrow or direct direct call, dot operator, arrow operator, dot arrow as required. The answer will be D. Dot or arrow as required. Which feature of OOP reduces the use of nested classes? Nested classes का कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जो नेस्टेड क्लासेस के यूज को कम कर देता है? दैट इज इनहेरिटेंस. नेक्स्ट, व्हिच कीवर्ड अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावा? किसी भी एक एरे को, सॉरी, just read it the question. Which keyword among the following can be used to declare an array of objects in Java? किसी भी जो array of objects होगा उसको declare करने के लिए कौन सा keyword use किया जाता है? That is new. New keyword is used to initiate and declare an array of a object in Java. Next, which operator can be used to free the memory allocated for object in C++? The answer is delete keyword used to allocate the memory, to free the memory allocated for object in C++. Next, which of the following is not a property of an object? Properties are the properties, identity is also a properties, attributes. The names is not the properties. Next question. Which type of members can't be accessed in derived classes of a base class? You all know, that is very good. Private. Which among the following best describes the inheritance? Using the data, option A is using the data and function into derived segment, using already defined functions in a programming language, using the code already written once, copying the code already written. The answer is A, using the data and function into derived segment. Next, single level inheritance supports dash inheritance. Option A, language independency. B, multiple inheritance. C, compile time. D, runtime. The answer is runtime. How to overcome diamond problem? Using separate derived class. B, using virtual keyword with same name function. Can't be done using alias name. The answer is B, using virtual keyword with same name function. Which keyword is used to declare virtual functions? That is virtual. Next, what happens if non-static members are used in a static member function? It gives compile time error. Next, what is friend member functions in C++? Non-member function, option A is non-member function which have access to all the members including private of a class. Option B, member function which does not have access to private members. Option C, member functions which can modify any data of a class. Option D, member function which can access all the members of a class. The answer is A, non-member functions which have access to all members including private of a class. Question 35. Where is the memory allocated for the objects? You must know the memory allocated is the memory that is allocated for objects
that is RAM. Which of the following best describes member function overriding? Option A, member function having the same name in derived class only. Option B, member functions having the same name and different signature inside main function. Option C, member functions having the same name in base and derived classes. Option D, member functions having the same name in base class only. The answer is C, member functions having the same name in base and derived classes. Next question, encapsulation and abstraction differ as. Option A, heading and heading respectively. Option B, binding and hiding respectively. Option C, hiding and binding respectively. D, can be used anyway. Think about it. I've already told. Yeah, that is binding and hiding respectively. Encapsulation is for binding the data, and abstraction is for hiding the data. Which feature of OOP is exhibited by the function overriding? Polymorphism, encapsulation, abstraction, inheritance. The answer is polymorphism. Next, how to access the private member function of a class using. Option A, using class address, using object of a class, using object pointer, using address of function, address of member function. The answer is using address of member function. Which keyword should be used to declare static variables? That you all must know, that is static. Which is correct syntax for declaring pointer to object? The correct option is class name. You all know, I think you all must know that pointer, for the declaration of pointer we use a star button, a star keyword, that is star symbol, and where it is used after class name. That is why the correct answer will be class name star object name. This is called asterisk. A star. If data members are private, what can we do access them from the class object? Let's go directly to the answer. The answer is create public member function to access those data members. You will have to create public member function to access those data members that are private. Which among the following is not a necessary condition for constructor? Its name must be same as that of class. It must not have any return type. It must contain a definition body. It can contain arguments. The answer is it must contain a definition body. Next, object being passed to a copy constructor. Object being passed to a copy constructor is that must be passed by reference. If in multiple inheritance, class C inherits class B, class C inherits class C inherits class B, class B inherits and class B, and class B inherits class A, and then in which sequence are there destructor called if an object of class C was declared? Let's see, there will C must be first, because we always used the derived class first, then the base class. The base class for C is
B, and for B the base class is A. Then the sequence will be here. The C will come first, then B will come second, and then the A will come third. That is why answer will be C. Instance of which type of class can't be created? किसका इंस्टेंस, किस टाइप का क्लास का इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता? द आंसर इज abstract class. Abstract class is a kind of class which instance can't be created. Fine. Next, that dash underlines the features of polymorphism in a class. The answer is virtual function underlines the features of polymorphism in a class. Which feature in object-oriented programming is used to allocate additional functions to a predefined operator in any language? That is operator overloading. Next, which feature can be implemented using encapsulation? The answer is answer is given here, not an issue. Fine. That is why the answer is the abstraction. Abstraction is used for what? Abstraction is used to, we can say abstraction को implement करने के लिए किसका यूज किया जाता है? That is encapsulation. Fine. So that's fine for today. Thank you. We have discussed today total 49 questions of OOP, and for the next chapter and the next topic we will meet in the next video. Till then, thanks for watching. Bye bye.